जय अमिदरी एमए और डिप्टी चेयरमैन। कौन नहीं बैठा? आप? मैं बैठ जाऊंगा, आप लोग तकरीर करने वाले बन जाएं। 12 बजे तक मैं इधर हूं। Thank you, Chairman Saab. It's very kind of you to give me time today. I would like to begin in English because I feel there are messages we need to give to our brethren who understand English, and then later to our own people. I will give my message in Urdu. So I would like to say that I've heard everyone speak of, wanting to have human rights and wanting to have the West play its humanitarian role, wanting the United Nations to do its bit. But may I remind my friends that if we look at history and we look at how this entire story began in the last 150 years, we don't need to ask anyone. The story is open, it's written on the wall. Why can't we see? We are aware that the lovers of Zion got together in 1884. In Basel, Switzerland in 1897, the first Zionist conference was held under Mr. Theodore Herzl. We know that once the First World War started, the powers that be at that time sat down and an agreement was signed in 1916 by Mr. Sykes and Mr. Picot. Mr. Sykes was from Britain and Mr. Picot was from France. And they made the plan for the breakdown of the Ottoman Empire. This is history. And finally, the Balfour Declaration that so many people have mentioned was put forward in 1917. So this is all under a design. The fact that Israel was given the land of Palestine in 1948 was by design. The fact that the land of Palestine is shrinking in the last 70 years, particularly after the war of 1967, it is all by design. And we need to stop fooling ourselves that if the United States of America has passed a bill to give $100 billion in aid to Israel or to Ukraine, this is all by design. If the Secretary of State, Mr. Anthony Blinken, goes to Israel and says, before being the Secretary of State, I am a Jew first. Mr. Joe Biden, who went to, who visited the Middle East a few weeks ago, his main intention of going there was to make the Palestinians who are stuck in that open jail where they're being killed, genocide is happening. He went to negotiate with the government of Egypt and Jordan to accept the Palestinians, give them the right of way out of Gaza. We know all this is happening, then who are we asking for help? We need to look at ourselves now. It is time we understand the duplicity of the people we are asking for humanitarian aid, or what Mr. Antonio Guterres, the Secretary General of the United Nations, gave a very balanced speech. The only phrase he said which brought him the ire of the Israelis, the Americans, and everyone was that what happened on October 7th did not happen in a vacuum. And that phrase brought a demand of resignation from the Secretary General, and I was looking at the United Nations website yesterday, and there was no mention of this phrase in the speech of the Secretary General. That is how strong the designs of these powers are. So we need, sir, to also remember that in 2014, when one Israeli soldier was kidnapped by Hamas, taken hostage, the Palestinians were bombed for 4 days for one Israeli soldier. So what do you expect from them? They are going to they want to wipe out the Palestinians. They want to take the land of Palestine, and they have the designs to make a greater Israel.
So with all due respect to all of the powers who are supporting them, we say we know what you are doing. Our eyes are open, our hearts are bleeding. But please remember, Chairman Saab, with your honorable presence, we would like to remind them that what you sow today, you have to reap tomorrow. And their own people in all of these countries are speaking up. They are speaking up, they are standing up, and Jews are standing up. We see them in the parliaments of the UK, we see them in the European Union, we see them in Canada, we see them on the streets of the world. So please, hark to this. This kind of oppression cannot go on. अब मैं उर्दू में एक दो बातें करना चाहूँगी चेयरमैन साहब, ये तो थी उन लोगों के लिए जो अंग्रेज़ी समझते हैं। अपने लोगों के हवाले से मैं दो बातें करना चाहूँगी। सबसे पहले तो मैं मुनीर अकरम साहब को एक खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगी। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तकरीर की और जिस तरह से उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि कनाडा ने जो अमेंडमेंट पास प्रेजेंट की थी उसमें इजराइल का नाम नहीं था और हमास का नाम बड़ा बड़ा था. सो वी आर वेरी वेरी हैप्पी एंड ऑनर्ड बाय द वर्ड्स ही सेड. On the other hand, I was looking at our very honorable ambassador to the United States. उन्होंने उनकी एक ट्वीट में देख रही थी 28 अक्टूबर को हमारे बहुत ऑनरेबल एम्बेसडर यूनाइटेड स्टेट्स में जो है, जो इससे पहले आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट भी थे और उनकी बैकग्राउंड भी वहीं से है, उन्होंने 28 तारीख को मैकडॉनल्ड कॉरपोरेशन के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और ग्लोबल चीफ से मुलाकात की है. टाइमिंग देखें, टाइमिंग इज इंपेरेटिव इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स. और उन्होंने कहा है कि प्रमोट करेंगे स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बिटवीन द फेडरेशन ऑफ चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पाकिस्तान एंड द मैकडॉनल्ड्स कॉरपोरेशन. इस वक्त दुनिया में शोर मचा हुआ है कि वो सब मसनूआत जो हम लेते हैं उन ऑर्गेनाइजेशन से जो सपोर्ट करती हैं, ये जो इस वक्त कत्लेआम हो रहा है, इन ऑर्गेनाइजेशंस को हम चंद दिन वेट ही कर लेते हैं हमारे बड़े ऑनरेबल एम्बेसडर साहब. और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, ये मैसेज लोगों के दिल को चीर गया है. तो बहुत अफसोस हुआ है ये देख के, ये किस किस्म की स्टेट पॉलिसी चल रही है कि मुनीर अकरम साहब उनके पास न्यूयॉर्क में बैठे हैं, वो कुछ तकरीर कर रहे हैं और हमारे एम्बेसडर साहब की ये बात. तो एक तो ये मुझे पहुंचाना था. दूसरा एक सकूत है हमारी हुकूमत जो इस वक्त इंटरिम गवर्नमेंट है. हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब कल तशरीफ़ लाए थे, बहुत ऑनरेबल हैं हमारे लिए, लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहूँगी अल्लामा इकबाल के अल्फाज में कि फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं. अगर आप अपने अवाम की उमंगों को नहीं समझते, उनको आगे अक्कासी उनकी नहीं करते, तो फिर आपका फेलियर ही होगा. और अल्लामा इकबाल का एक और शेर जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी, क्योंकि अल्लामा इकबाल रहलत फरमा गए थे दुनिया से इज़राइल के बनने से पहले, तो उनके जितने भी अशार हैं वो उससे पहले के हैं. लेकिन उन्होंने उन्होंने सूरा अंबिया की 95 और 96 जो आयत है उसके हवाले से उन्होंने एक बड़ा अच्छा शेर कहा. उन्होंने कहा कि, और इसके ऊपर आजकल बड़ा वो भी हो रहा है, बड़ा इसका प्रचार भी हो रहा है, बहरहाल, खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम, चश्म मुस्लिम देख ले तफसीर हरफे युनसलून. सो एनीवे, कहने का सारा मकसद ये है कि हम देख रहे हैं, हम खुश नहीं हैं और हम चाहते हैं कि हमारी कौम और हमारे लोग that the Muslims and especially Pakistan, because Pakistan का एक leadership role है, we are the only Islamic state that is nuclear. और नेतन्याहू साहब ने भी फरमाया कि मुझे 2 मुल्कों से डर है, एक ईरान से और एक पाकिस्तान से. तो पाकिस्तान ने करना तो कुछ नहीं है, लेकिन कम अज कम एक आवाज, कुछ करने की उम्मीद तो सब नहीं दिखाई है. तो एनीवे, बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब, आई एम वेरी ग्रेटफुल, आपने मुझे वक्त दिया. थैंक यू.